Do you know the fact that first Supreme Court of India was not established in 1950, rather it was established at the time of British India. First Supreme Court of India was established in 1774 at Fort William, Calcutta. Later it was replaced by High Court of Calcutta in 1862. Hello everyone, I am Vansh Nagpal. Welcome back to Juris Legal Chambers. And आज की इस वीडियो में हम हाई कोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट्स कैसे हुई थी, हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है, एंड हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. Today's video is in accordance with Chapter 5 of Part 6 of the Constitution. It talks about the judicial system of the states, ranging from Article 214 to Article 232. आज के इस वीडियो में मैंने सारे important names, points, dates, years सब mention कर रखे. So let's begin the video. Starting from our first point, establishment. The High Courts in India are established in accordance with High Courts of India Act 1861. Well, the first High Court established was Calcutta High Court in year 1862. 1862 में बाद में मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश हुए थे. अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट हाई कोर्ट्स कौन से स्टैब्लिश हुए थे, तो हमेशा पहले 4 हाई कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. फर्स्ट वन वॉज कैलकाटा हाई कोर्ट, देन बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, and the fourth one was Allahabad High Court, which was established in year 1866. Britishers ने इंडिया को टोटल 9 प्रोविंसेस में बांट रखा था. So there were separate high court for each province while in the time of British India. But after independence, the country was divided in 28 states. Until 1950, the number increased to 29. So 29 states के लिए अब हमारे पास टोटल 9 high courts थे. But according to Article 214 of Constitution of India, we need a high court for all the states, but we were not having enough resources to make 29 high courts at that time. So according to Article 231 of Constitution of India, there can be a common high court for 2 or more states. Currently there are total 25 high courts for 28 states in India. And last high court established was Telangana High Court, which was established on 1st January 2019. Delhi is the only union territory with its separate high court. The Delhi High Court was established on 31st October 1966, and it was established with the composition of 4 judges. The first Chief Justice of Delhi High Court was Justice K.S. Hegde. Coming to our second point, composition. There shall be a Chief Justice and other judges for all the high courts. However, there is no prescribed number for composition of high court judges for any high court. However, it depends on the discretion of President. President कभी भी इस नंबर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, and depending upon the circumstances and the workload जितना हाई कोर्ट के पास केसेस आते हैं. I am making this video in June 2020. And currently there are total 1079 judges sanctioned as judge of high courts in India, amongst which 771 judges are sanctioned as permanent judges and rest 308 judges are sanctioned as additional judges. Now the question is, what are the qualifications to become a judge of high court? Well, according to Article 217 Clause 2 of Constitution of India, such person shall be a citizen of India, and secondly, such person shall either be an advocate of High Court or Supreme Court for 10 years, or he should be a judge of any court for 10 years in succession. Then he is eligible to become a judge of High Court. Moving on to our fourth point, appointment of High Court judge. कभी भी किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट खुद उसे अपॉइंट करते हैं with the consultation of collegium. Collegium क्या होता है, ये जानने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा. Go watch that video अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी, एंड आपको collegium का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. According to third judge case of 1988, president is bound to consult
and to take suggestions from Chief Justice of India and 2 other senior most judges of Supreme Court of India. इनसे सजेशन लेने के बाद ही प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं. However, President only appoints the judge of High Court, but whenever a High Court judge takes oath, he takes oath in presence of Governor of the state or any person appointed by the Governor. Moving on to our 5th point, term of office. Well, any person who is the judge of High Court holds the office till he attains the age of 62 years. 62 साल की एज कंप्लीट करने से पहले भी अगर कभी भी हाई कोर्ट का जज रिजाइन करना चाहे, he can give his written resignation to the president himself. While in the process, whenever president feels that a high court judge shall be removed, a high court judge can be removed by the president only on the grounds of proved incapacity and misbehavior. अगर कभी कोई ऐसा केस होता है, then a motion has to be passed with special majority from both the houses. आज तक कभी भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया. Before we move on to powers and jurisdiction of high courts in India, I would like to tell you very important few points about high courts and the judges of high courts. Well, do you know the fact that Article 220 specifies that any person who is retired as the judge of high court is not allowed to practice before any lower court of judiciary? Do you know what is the salary of high court judge? 2017 के अंदर लॉ मिनिस्टर ने एक बिल प्रपोज किया था जिसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी 80,000 से बढ़ के 2,25,000 पर मंथ हो जानी चाहिए एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी 90,000 से बढ़ के 2,50,000 पर मंथ हो जानी चाहिए. एंड नॉट ओनली दिस, इस बिल में पेंशन अमाउंट भी इंक्रीज करवाया गया था. पेंशन अमाउंट वाज इंक्रीज टू 13,50,000 per annum for the judge of high court and 15 lakh rupees per annum for the chief justice of high court. This bill was accepted by parliament in 2018 and these are the current amount of salaries and allowances and the pensions of the judges of high court. Well, the salaries and allowances of judges of high court are borne by the consolidated fund of the state and the pension amount is given by the central government. Now question is, what is additional judge and what is acting judge? How are they different from permanent judges of high court? Well, अगर कभी भी हाई कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है एंड परमानेंट जजेस उस वर्कलोड को सारे को हैंडल नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे केस के अंदर प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जज. सो एडिशनल जजेस आर देयर टू हेल्प दी परमानेंट जजेस एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. While on the other hand, अगर कभी कोई परमानेंट जज बिकॉज ऑफ एनी रीजन, if he is unable to perform his duty, if he is absent, if he is regularly absent, then in such a case, an acting judge can be appointed by the president. Article 224 of Constitution of India clearly specifies that in no condition such additional judge or acting judge shall hold the office after they will attain the age of 62 years. Moving on to our last part, jurisdiction of high courts. Well, there are total 5 types of jurisdictions which a high court in India can exercise. First jurisdiction is original jurisdiction. Original jurisdiction of high court only applies when any subordinate court is not authorized to take such case due to lack of pecuniary or territorial jurisdiction. High court can exercise its original jurisdiction only in matters related to marriage, will, admiralty, company laws or election laws or contempt of court. Well, it is nowhere defined, the original jurisdiction of high courts is nowhere defined in the Constitution of India because the original jurisdiction of high court is practiced only by 5 high courts in India. That is Bombay High Court, Calcutta High Court, Madras High Court, Delhi High Court and Himachal Pradesh High Court. बाकी 20 हाई कोर्ट्स के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अपेलेट जुरिस्डिक्शन ही होती है. स्पीकिंग ऑफ अपेलेट जुरिस्डिक्शन, जब भी कभी किसी लोअर कोर्ट में कोई जजमेंट आती है एंड अ पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, अग्रीव्ड पार्टी में फाइल एन एप्लीकेशन एंड जब भी कभी अपील के थ्रू हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होती है तो इट इज नोन टू बी अंडर अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. Third one is writ jurisdiction.
जब भी कभी हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा होता है कि किसी भी सिटीजन का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ है, तो उस केस के अंदर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इशू एनी ऑफ द 5 writs. 5 writs are habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto. You can click on the I button if you want to watch my video which is about writs. उस वीडियो में मैंने आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 का कंपैरिजन के बारे में भी बताया हुआ है। फोर्थ वन इज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1961, हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी कोर्ट्स ऑफ द प्रोविंस. नाउ अंडर आर्टिकल 227 of the constitution, as the highest authority court of the province, it is the duty of the high court to supervise all other courts of the province or the state. Last jurisdiction is the jurisdiction of judicial review. अगर कभी भी किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा होता है जहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है विच इज अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता, सो अंडर आर्टिकल 228 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the high court may dispose of such a case itself or solve such problem, solve such question of law involved, and then return the case to the subordinate court. So that's all for today. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनके अलग अलग पावर्स है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बता रखी है. सो यू कैन रेफर टू दैट. And thank you so much for watching. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.